So my dear student, you see another question here. So here let capital L be the set of all lines in a plane and R be the relation in capital L defined as this way. Yes, you see the definition of this relation. क्या दिया है? R equal to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. That means कोई भी एक लाइन L1 L2 का साथ रिलेट होगा only when L1 is perpendicular to L2. This is given. Yes. Now we need to show this R is symmetric but neither reflexive nor transitive. So first of all, you see they consider capital L is nothing set of all the straight line in a plane, and they define a relation R on that capital set L such that this R is this one. R में L1 line L2 का साथ relate होगा only when they are perpendicular to each other. Yes, this is okay. So now we need to show this is symmetric. So guys, you see, suppose we consider this is our L1 line and suppose this is our L2 line, and we consider this L1 is perpendicular to L2. If this L1 is perpendicular to L2, then obviously L2 also perpendicular to L1 होगा. जब L1 ले L2 का साथ perpendicular हुआ है तो L2 भी L1 का साथ क्या होगा? perpendicular ही होगा. That means if L1 is related to L2, then obviously L2 भी L1 का साथ क्या होगा? relate होगा. That means ये क्या हो जाएगा? symmetric हो जाएगा. ठीक है. So just here let L1 एक line है and L2 another line here which is related to R. Suppose we consider L1 L2 का साथ related. Now we need to show L2 is again related to L1. Yes, then देखो since L1 is related to L2, so from the definition of this relation क्या होगा? L1 is perpendicular to क्या होगा? L2 होगा. सो अभी देखो इसमें एक लाइन L1 है, ये लाइन L2 है. ठीक है, ये L1 है और ये L1 L2 का साथ परपेंडिकुलर होने से अभी देखो ये L2 भी L1 का साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन राइट L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1. दैट मीन्स फ्रॉम हियर L2, L1 बिलोंग्स टू क्या होगा? R होगा. यस, दैट मीन्स दिस R इज क्या है? सिमेट्रिक है. तो R तो सिमेट्रिक होगा. फॉर रिफ्लेक्सिव, सो व्हेन ए रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ओनली व्हेन A, बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स ये रिलेशन आर सेड टू बी रिफ्लेक्सिव ओनली every element of the set is related to itself. Yes, so जो कैपिटल L हम लोगों को था सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई भी एक स्मॉल l एक लाइन ले लो. नाउ वी चेक व्हेदर दिस स्मॉल l इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और नॉट. नाउ यू सी हियर सपोज दिस इज आवर स्मॉल l लाइन. नाउ वी चेक व्हेदर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. नो, लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा? ये जो l है ना, ये l का साथ कभी भी क्या नहीं होगा? कनेक्ट नहीं होगा. दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगा? R का अंदर में नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा. नॉट क्या है? रिफ्लेक्सिव. सो नाउ कम फॉर ट्रांजिटिव. सो व्हेन ए रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, डू यू नो? if this one, if A, B and B, C belongs to R implies क्या था? A, C belongs to R होना चाहिए. So similarly you choose here two lines, this one for this one. So similarly what we do here, let's suppose L1, L2 and L2, L3 belongs to R. Suppose guys this L1 is perpendicular to L2 होगा, and for this one this L2 line also perpendicular to क्या होगा? L3 होगा. Yes, that means you see here, सपोज मान लो ये हम लोगों का क्या है? L1 है. अभी L1 का परपेंडिकुलर सपोज मान लो L2 है, एंड L2 का परपेंडिकुलर कितना है? सपोज मान लो ये हम लोग का क्या है?
this is our L3 है. Now we check whether this L1 is perpendicular to L3. No, this L1 will be parallel to L3 here. That means these two conditions together will imply this L1 is parallel to L3, not perpendicular. That means this L1 is not perpendicular to क्या है, L3 है. That means क्या होगा, L1 L3 तो R में रहेगा ही नहीं. तो देखो L1 L2 का साथ है, L2 L3 का साथ है, बट ये जो L1 L3 का साथ नहीं है. दैट मीन्स R क्या नहीं होगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव. यस.